You all, I'm Aditya Kashyap and I come up live again with the part 3 of CPC Q&A. So if you are getting my voice clearly, let me know in the comment section. Let me know in the comment section. Thanks, Gaurav. Thanks, Gaurav. चलिए शुरू करते हैं, है ना. So let's start with the few facts of CPC. So CPC is that the Code of Civil Procedure 1908. Okay, so it consists of 158 sections and 51 order. It became operative from 1st January 1909. It applies to whole India except state of Nagaland and tribal area. So these are the fact, and CPC is a procedural law and it applies on civil matter. And what is civil matter? The matter which is not criminal is civil matter. So simple as that. तो अब आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर, है ना, सीरीज. आई हैव ट्राई टू मेक सम changes in my live session. Hope you will like it. To make it more engaging, I have tried something. So guys, our today's lecture is our today's topic is res sub judice. Okay, so let's start with the question. So section 10 of Civil Procedure Code 1908 does not apply when the previous suit is pending. Section 10 of CPC 1908 does not apply when the previous suit is pending. What? In a same court, in a foreign court, in the court outside India established or continued by the central government, or in any other court in India. So what should be the right answer? So section 10's res sub judice will not apply in a foreign court matter, है ना. So this is the right answer. Res sub judice will apply in the same court, in the court outside India established or continued by the central government, क्योंकि ये उसकी हमारे कंट्रोल में आता है, और इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया. तो यहाँ पे रेस सब जुडिस लगेगा, लेकिन जब मैटर पेंडिंग बिफोर अ फॉरेन कोर्ट होगा तब रेस सब जुडिस नहीं लगेगा. आगे बढ़ते हैं. This is question number 1. Now let's talk about question number 2. Which section of CPC lays down the rule of res sub judice? So res sub judice अभी हम लोगों ने पढ़ा. Section 10 talk about res sub judice, right? So the correct answer is section 10. Third question है, which of the following section of the Code of Civil Procedure deal with stay of suit? So stay of suit is also another word of res sub judice. So section 10 is the right answer, है ना. The term res sub judice means, what is this means? So अभी हम लोगों ने देखा the term res sub judice means stay of suit, and which is mentioned in section 10 of CPC. Under section 10 of CPC, a suit is liable to be dismissed, stayed, rejected, or either A or B or C. So a stayed means res sub judice क्या करता है कि बात करता है अगर सेम मैटर, मतलब एक ही मैटर का दो केस चल रहा है तो एक ही केस में तो एक को स्टे कर दिया जाता है, यही रेस सब जुडिस होता है. ठीक है. सो रेस सब जुडिस में क्या होगा, स्टेड हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. द रूल ऑफ रेस सब जुडिस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 of CPC. The rule of res sub judice as provided in section 10 of CPC is what?
स्टे द ट्रायल ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट, है ना। अगर सेम मैटर पे केस चल रहा है और सेम ही मैटर पे दूसरा केस आएगा तो उसी कोर्ट में, तो उसको स्टे कर दिया जाता है। यही रेस्ट सब्जुडिस होता है, जो कि सेक्शन 10 में ऑफ सीपीसी में मेंशन है। So this is the question, question number 6. Now question number 7. Section 10 of CPC bars not only the trial of the subsequent suit but also the institution of subsequent suit. This statement is क्या ये सही है, पार्टली ट्रू है, अनट्रू है, ट्रू है, नन ऑफ द नहीं। देखो ये सब्सिक्वेंट सूट को वो करने से, इंस्टीट्यूशन करने से बार नहीं करता है, ठीक है। ये केवल स्टे लगाता है। रेस्ट सब्जुडिस ओनली पुट अ स्टे ऑन सब्सिक्वेंट सूट, सो इट इज अनट्रू, दिस स्टेटमेंट इज अनट्रू। और आगे बढ़ते हैं। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन अंडर कंसिडरेशन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स अंडर कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। अंडर द कंसिडर, ये वही हो गया, रेस्ट सबजुडिस हो गया, है ना। अंडर कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब सबजुडिस है, मैटर सबजुडिस है। इसीलिए जनरली हम लोग नॉर्मल टर्म में बात करते हैं जब भी कोई मैटर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट होता है, तो उस पर कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं देते, क्योंकि जो पार्टी होता है वो आउटसाइड में जाके स्टेटमेंट नहीं देता, क्योंकि वो मैटर क्या होता है, सब जुडिस होता है, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वेदर द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट विल preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action. Whether the pendency of a suit in foreign court will preclude the court in India from trying a suit founded on the same cause of action. तो आप ही लोग बताओ क्या ये सही होगा। रेस्ट सब्जुडिस सेम इंडिया के कोर्ट में ही लगता है, फॉरेन कोर्ट पे नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी कैन कम इनटू ऑपरेशन। सेक्शन 10 कब ऑपरेशन में आता है सीपीसी का, तो ये आता है बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट इन द सब्सिक्वेंट सूट, ये सही है। बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू इन सब्सिक्वेंट सूट, ये भी सही है। एंड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इशू इन सब्सिक्वेंट सूट, तो बेसिकली बिफोर ट्रायल ये आ जाता है फोर्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसीआर। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसीआर क्या है, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी है, या नन ऑफ द अबव है। सो इट इज़ मैंडेटरी प्रोविजन, क्योंकि एक ही मैटर पे 2-3 केसेस अलग अलग चलने का क्या ही मतलब बनता है, इसीलिए स्टे ऑफ द सूट होता था। सो दिस इज अ मैंडेटरी प्रोविजन अंडर सेक्शन 10, है ना, रेस्ट सब्जुडिस। अंडर सेक्शन 10 कोड ऑफ सिविल प्रोविजन 1908, let me change the so under section 10 CPC 1908, a court during pendency of suit before it क्या होता है ये, shall not proceed to trial though may entertain second suit, right answer। Which of the following is not an essential condition for the applicability of the rule of sub judice? So, not an essential condition for the applicability of the rule of sub judice. So, the answer is the subject matter and the cause of action should be same in both the suit. The subject matter and the cause of action should be same in both the suit. So, on that, this is not an essential condition. The subject matter and the cause of action should be सेम इन बोथ द सूट, ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है।
such party must be litigating under the same title in both the suit. Both the suit must be between the same party or their representative. ये भी सही है. Both the matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. तो ये भी सही है. But fourth जो option है वो wrong है. So this is question number 13. आगे बढ़ते हैं. The tenant filed a suit for permanent injunction against B, the landlord, for not to be disposed except by due process of law, pleading that B is planning to forcibly disposes him. During the pendency of the above suit, we attempt to forcibly disposes A. A file another suit for injunction. तो इसमें क्या होगा? The second suit is barred by res judicata. The rule of sub judice will apply. Both A and B and none of the above. So इसमें क्या होगा? The rule of sub judice will apply. The right answer is the rule of sub judice will be applied. In the case of res sub judice under section 10 of the Code of Civil Procedure Code, the court can, what the court can? Court can pass interim order, grant injunction, appoint a receiver, all of the above. So, in the case of res sub judice under section 10 of the CPC, the court can pass an interim order, court can grant of injunction, and appoint a receiver. So, all the three options are correct. So, आगे बढ़ते हैं. Which is the correct essential condition for applicability of rule of sub judice? ठीक है, तो देखते हैं. The matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. क्या ये करेक्ट है? तो हाँ जी, ये करेक्ट है ना. The matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. तभी तो res sub judice लगेगा. उसके बाद बी की बात करते हैं, तो ये कह रहा है द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट. द पार्टी मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट. तभी तो res sub judice लगेगा, है ना. अगर टाइटल ही अलग अलग होगा तो फिर इशू भी अलग हो जाएगा, तो बात ही अलग हो जाएगी, तो res sub judice तो लगेगा ना. तो दोनों सही हो जाएगा. तो व्हाट द राइट इज the matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in the issue in the previous suit. सही है. The parties must be litigating under the same title in both the suit. ये भी सही है. आगे बढ़ते हैं. A है एक इंडियन सिटीजन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद B, अ यूएस सिटीजन बेस्ड इन यूएसए. ठीक है, A है जो एक इंडियन सिटीजन है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है विद B जो कि एक यूएसए का सिटीजन है. सर्टन डिस्प्यूट्स अराइजेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड बी फाइल्स अ सूट इन द मैटर इन द सिविल कोड. सो बी फाइल द सूट इन अ मैटर इन द सिविल कोड ऑफ न्यूयॉर्क. तो बी जो न्यूयॉर्क में सिविल सूट फाइल करता है, एंड ए फाइल्स अ काउंटर क्लेम इन द सेड सूट. सब्सिक्वेंटली ए फाइल अ सूट इन द सेम मैटर इन द जुरिडिक्शन सिविल कोड इन न्यू दिल्ली. इज द लेटर कोड बार्ड फ्रॉम ट्राइंग द सूट. तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक ये res sub judice का नियम अप्लाई कब होता है? जब वो इंडियन कोर्ट में होता है तब. लेकिन एक अगर इशू फॉरेन कोर्ट में चल रहा है और एक इंडियन कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ पे res sub judice का जो प्रिंसिपल है जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है वो अप्लाई नहीं होता है. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नो, बिकॉज द पेंडेंसी ऑफ सूट इन द फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट बेस्ड ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन. दिस इज res sub judice सेक्शन 10 फॉर यू. आगे बढ़ते हैं.
Plaintiff P present his plaint in the court of original jurisdiction against defendant D. The defendant resists the plaint, claiming that the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous instituted suit between the same party in the United Kingdom. After hearing the parties on res sub judice, the court exercised the power contained in section 151 and stay the proceeding. Choose the correct response with the respect to section 10 of CPC 1908. What should be? So the suit pending in foreign jurisdiction can't be considered in India. अभी हम लोगों ने देखा ये घुमा फिरा के वही बात कर रहा है। अगर कोई एक सूट है जो कि फॉरेन कोर्ट में है और वही स्वयं सूट उसी इशू पे अगर इंडियन कोर्ट में है तो क्या इसमें सेक्शन 10 का बार लगेगा? घुमा फिरा के यही बात कर रहा है। और इसमें सेक्शन 151 का जो पावर होता है कोर्ट का उसको यूज कर रहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। बट यहाँ पे इन सब का कोई रोल नहीं होगा। जहाँ पे भी रेस सब जुडिस की बात आएगी, रेस सब जुडिस ऑलवेज अप्लाई इन जुडिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, है ना। क्योंकि हम दूसरे के जुडिस्डिक्शन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अपने जुडिस्डिक्शन में ही करेंगे। और यहाँ पे दो सेम मैटर है, सेम टाइटल है, बट द बोथ इशू इज ट्राइड इन अ डिफरेंट जुडिस्डिक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली जुडिस्डिक्शन का भी खेल आ जाता है रेस सब जुडिस में, तो यही हो जाएगा। सूट पेंडिंग इन अ फॉरेन जुडिस्डिक्शन कांट बी कंसिडर्ड इन इंडिया, है ना। दिस इज द राइट आंसर। आगे आगे बढ़ते हैं इस पे, है ना। होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, होप यू आर इंटरेस्टेड इन द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द एक्सप्लेनेशन। In which of the following situation can a stay of subsequent suit be granted under section 10 of the CPC? So, in which of the following situation can a stay of subsequent suit be granted under section 10 of CPC? तो ये क्या हो जाएगा? Where the matter in issue in both the suits are substantially similar and is pending between the same party. तभी तो रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस का नियम ये होता है where the matter in issue in both the suit are substantially similar and it is pending between the same party, मतलब सेम टाइटल हो, सेम इशू हो, केस जुडिस्डिक्शन में हो, तो रेस सब जुडिस लग जाएगा, है ना। तो दिस इज रेस सब जुडिस सेक्शन 10। होप you liked it. Any type of improvement if you want from this lecture, you can tell me. I'm not very good in the technology. I am trying to be good at this also, but currently whatever I can, I am doing. एक बार हम लोग रेस सब जुडिस पढ़ लेते हैं बेरेट से, है ना। ये बात करता है स्टे ऑफ सूट, स्टे ऑफ सूट जिसको हम लोग रेस सब जुडिस भी कहते हैं। ये क्या कह रहा है? नो कोर्ट शैल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previous instituted suit between the same party or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limit of India established or continued by the central government and having likely jurisdiction or before the Supreme Court. ये हो गया रेस सब जुडिस। इसमें यही क्या बात कर रहा है? तो कोर्ट ऐसे किसी भी मैटर को प्रोसीड नहीं करेगा। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है विद द ट्रायल, जहाँ पे जो मैटर इशू है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन जो इशू है प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड सूट में भी है, ठीक है। और जो पार्टी है वो सेम पार्टी है, और बिटवीन द पार्टी अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और उसके अंदर अगर कोई और भी है जो लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, मान लो LR है ना, LR होता है उसी टाइटल के अंदर लिटिगेट करता है। तो ये एक इशू, ये एक इंग्रेडिएंट्स हो गया। और उसके बाद क्या बात करता है? उसका जुडिक्शन होना चाहिए, है ना। Having jurisdiction to grant the relief claimed by or in any court beyond the limit of India established or continued by the central government। देखो बियॉन्ड इंडिया भी होगा तो established और
कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। एक तो इंडिया में होगा तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट का जुडिशन हो। इंडिया के बाहर में भी कोई ऐसा कोर्ट है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का जुडिशन है, तो बस इतने केस में जो जुडिशन वाला बात आ गया, सेम पार्टी हो गया, और मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हो गया, तो ये तीनों चारों चीज़ होना चाहिए, तभी रेस्ट सब जुडिस का प्रिंसिपल जो है सेक्शन 10 वाला वो लगता है। और रेस्ट जब सब जुडिस मतलब क्या होता है, इट मीन्स स्टे ऑफ सूट। दिस इज ओवरऑल सेक्शन 10 ऑफ CPC 1908 is saying to you guys, right? This is all from my side. If you have any problem regarding section 10 of CPC, you can ask me in the comment section. I have dealt all the previous year questions related to res sub judice in this lecture. So guys, hope you have uh, find it interesting and meaningful too. I tried a different approach today. In part 3, we will come up again with the part 4 of CPC Q&A session, and also with an explanation regarding the section. So if you like my explanation, do like, share and subscribe and be the part of this beautiful family. Thank you very much for joining the session.